दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आप फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, सीवी बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं। पूरा एचडी क्वालिटी में फ़ोटो एडिटिंग करने सिखाऊंगा। कुछ इस तरीक़ा का फ़ोटो एडिटिंग करने सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो देख सकते हैं भाई, ऐसा फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे आज के इस वीडियो में। हम इस फ़ोटो को हम एडिट करने वाले हैं कुछ उसी तरीक़ा में। बैकग्राउंड चेंज करेंगे। यहाँ से बैक आना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पिंटरेस्ट सर्च करने के बाद आपको यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बैकग्राउंड सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारा बैकग्राउंड आ जाएगा। तो आपको जिस बैकग्राउंड को आपको अच्छा लगता है उस बैकग्राउंड को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कॉपी लिंक के नीचे उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपना गैलरी ओपन करना है। जिस फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को आपको ले लेना है। यहाँ पे आपको लेने के बाद यहाँ पे आपको नीचे शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो रूम में आपको इसको शेयर कर लेना है। फ़ोटो रूम में पे क्लिक करना है, आपका फ़ोटो वहाँ पे शेयर हो जाएगा। शेयर करने के बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ एआई के द्वारा से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आपको यहाँ से पे आपको वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जिस फ़ोटो को आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग करके आ गया है। जिस फ़ोटो को आपको अच्छा लगता है उस फोटो को ले लेना है। आपको यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे थोड़ा और भी एडिट हो जाता है। आपको यहाँ पे जिस फ़ोटो को आप अच्छा लगता है उस फोटो को आपको ले लेना है। देख सकते हैं बहुत सारा फ़ोटो आ गया है। जिस फ़ोटो को आपको अच्छा लगता है उस फोटो को ले लेना है। मैं ब्लर वाले को ले लेता हूँ। उस पर क्लिक कर देना है जिसको लेना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड का। लेयर के नीचे में बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको जिस बैकग्राउंड का
कर लेना है, क्लिक करना है।